Hello everyone, very good evening to all. Welcome to today's Technical Thursday session. And today we will be learning about uh, bands, channels and trend lines. सो आज के सेशन में हम टेक्निकल थर्सडे के जो टूल्स है उसमें हमने पहले भी काफ़ी कुछ सेशंस किए हैं एंड इन टुडेस सेशन वी विल बी लर्निंग अबाउट द चैनल बैंड्स एंड ट्रेंड लाइंस. सो लेट अस बिगिन विथ द सेशन. In between the session, I will keep updating you about how the tools which we are going to discuss today that will be used. एंड लाइव चार्ट्स पे भी उसको हम देखने की कोशिश करेंगे कि उसको हम कैसे डे टू डे एक्टिविटी में एज अ टेक्निकल एनालिस्ट कैसे यूज करके चल सकते हैं, राइट? सो डिफाइनिंग चैनल बैंड्स एंड ट्रेंड लाइंस, चैनल बैंड्स एक्सप्लेन्ड, ट्रेंड लाइंस एक्सप्लेन्ड, राइट? ये सारी चीजें हम लाइव चार्ट्स पे भी देखेंगे. तो हाउ द चैनल बैंड्स are used. The channel bands are technical tools that are define the bounds of price movement over the time, right? So चैनल बैंड्स जो भी कमोडिटी है चार्ट्स पे उसके हाइज और लोज जो बाउंड्स है उसको डिफाइन करते हैं एंड थ्रू यूजिंग दोस channel bands we can come to a conclusion whether there is a buying opportunity or a selling opportunity or a sort of a trend reversal, right? Same ways the trend lines are actually used manually by joining few points, right? So that we will discuss live on the chart, but before that let us go through some of the basics of this types of channels initially, and then we will go for a trend lines and channels, right? So पहले Bollinger bands है. There are two types of bands, right? Bollinger band and Keltner's channel. So both are to a certain extent very similar. अगर हम उनको charts पे देखें तो उसका जो look and feel है वो काफी similar होता है, but there is only one differentiation. If I talk about Bollinger bands, तो बॉलिंजर बैंड्स में 20 डे एसएमए होता है और 20 डे एसएमए के एक अपर बाउंड और लोअर बाउंड होता है जो तीन ट्रेंड लाइंस के तीन मूविंग एवरेजेस के थ्रू बिल्ड होता है. सो 20 डे मूविंग एवरेज प्लस टू स्टैंडर्ड डिविएशन अपर ट्रेंड लाइन अपर मूविंग एवरेज बनता है एंड टू स्टैंडर्ड डिविएशन माइनस 20 डे एसएमए एक लोअर बाउंड ऑफ मूविंग एवरेज बनता है. दिस इज हाउ बॉलिंजर बैंड्स इज बिल्ट. इन द सेम वेज कल्टनर चैनल्स में भी तीन बैंड्स होते हैं, middle, upper and lower, but the only difference over here which is used is for the upper and lower band or the mid band is that the average ATR, the average true range is used. So calculation में दोनों में यही एक बड़ा डिफरेंस है. बट अगर आप दोनों में से पूछोगे कि सबसे बेस्ट कौन सा है, तो मुझे लगता है कि जो सबसे बेस्ट है वो है कैल्टनल चैनल्स. दोनों में माइनर डिफरेंस होता है, बट कैल्टनल चैनल्स बिकॉज इट यूजेस ATR, because of that we get much better levels और रिवर्सल्स और ट्रेंड कंफर्मेशन बिकॉज वहां पर एटीआर यूज होता है जबकि बॉलिंजर बैंड्स में सिर्फ एसएमए यूज होता है. दिस इज द ओनली मेजर डिफरेंस इन टाइप्स ऑफ चैनल्स. वन इज बॉलिंजर बैंड एंड इन द अदर वन इज कैल्टनर चैनल्स. सो हम दोनों को ही चार्ट्स पे भी देखेंगे आगे जाते हुए, बट पहले थोड़ा बेसिक्स कवर कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, राइट? So to draw channel bands, identify highs and lows. To draw channel bands, first identify significant highs and lows within the price chart over a set period. Connecting points. The identifies highs to draw the upper bound and lows for the lower bound, forming a channel around the price movement, right? So I think ये सारी जो चीजें हैं वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में ज्यादा बेटर तरीके से हम उसको बता के चल सकते हैं. तो लेट अस गो थ्रू द चार्ट्स एंड लेट्स सी कि क्या कोई चार्ट्स पर हम इस चीज को यूज कर सकते हैं क्या. सो लेट मी टेक यू टू द चार्ट जहां पर हम इन चैनल्स को और बाउंड्स को यूज करने की कोशिश करेंगे. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. आई होप माई चार्ट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, राइट? सो यहाँ पर मैं चैनल्स के लिए सबसे पहले एक सिंपल चार्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ और वो है एक यूएसडी एनआर के चार्ट को हम देखने की कोशिश करेंगे. यूएसडी एनआर का जो चार्ट है वो हम डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखने की कोशिश करेंगे. सो पहले मैं पुराने कुछ
टूल्स हटा देता हूँ, राइट। सी देखिए, मैं क्यों डॉलर इंडेक्स या सॉरी यूएसडीएनआर का चार्ट ले रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अब जैसे कि वी वर डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू ड्रॉ trend lines or a channel, right? So this is like we will go through charts, and on a live chart we will try to implement a channel and a trend line. Now to draw a trend line, initially we need 2 points. So now we are going to draw a rising trend line, right? So this is a lower bound which we already discussed at the time when we were discussing on the PPT. So I have connected this lower bound, and I have taken a ray. So considering this point as the second bound, if I can say, then now this is a trend line which I have been drawn. So now since the low of say 8450, we have seen that हमने वहां पर एक लो के लेवल से जो सेकंड मे के करीब का था, वहां से हमने इस बाउंड को ड्रॉ किया है, और हम देख रहे हैं कि ये राइजिंग चैनल है, सॉरी राइजिंग ट्रेंड लाइन है, एंड दिस क्लियरली शोज दैट द ओवरऑल ट्रेंड फॉर यूएसडी आईएनआर इज पॉजिटिव। और हम देख रहे हैं कि प्राइसेस फ्रॉम द लोज ऑफ से क्लोज टू 84 25 30, हमने कहां तक देखा है उनको कंसिस्टेंटली हायर है। सो नाउ कंसिडरिंग दिस वी कैन से this trend line is indicating that the overall trend for USD INR is positive. So this is how a trend line can be used. Now taking a parallel to this, if I draw or joins the upper bound, so this is an upper bound and this is the next bound. So parallelly, if I draw one more trend line at the upper bound, now this becomes a channel. Now we are seeing that prices of USD INR are oscillating within this channel, and it has been forming a higher highs and higher lows pattern. Now, how we can define a higher highs and higher lows? So if I consider this point, so this is a high, this is a low. Again, this is a high and this is a low. Now, what is the difference? Why it is higher highs and higher lows? Now, this high is much higher than the previous high, and this low is much lower than the previous low. That is why the term which is used over here is called as higher highs and higher lows, right? So now this is how a channel has been drawn. This clearly indicates that the overall trend is very much positive for USDNR. Now, if I want to go and use some other terms, let me check. Okay, let us use a gold. सो नाउ दिस इज अ गोल्ड चार्ट, दिस इज इंटरनेशनल स्पॉट गोल्ड चार्ट। यहाँ पर सिंपल अगर मुझे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, सो दिस वाज द पीक which was say on the 2nd March of 2026 at around 5419. From that, if I join this second bound, then this is a downward sloping trend line. And this clearly indicates that unless and until prices are sustaining below this trend line, this clearly indicates that the overall trend for gold is negative, right? So gold ने 5419 के हाई से हमने देखा कि लोज हिट किया, आफ्टर दैट वी सॉ रिकवरी, बट after marking this second bound at around close to high of 4773, prices again started to be at a lower end, right? So यहाँ पर हम देख रहे हैं lower highs, lower lows. In the USDNR, when we saw, it was a higher highs and higher lows, but in gold spot international chart, this is lower highs, lower lows. So this is how a trend line or a channel can be used to understand, right? Now let us do one thing. We were also discussing about a Bollinger band or Keltner channels, right? So for a break, let us go to the this PPT again for a second. We will just go through all the definitions first, and then we will move ahead, right? So हमने already चैनल्स लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं ये तो हमने देख लिया। सो आइडेंटिफाई वॉलेटिलिटी थ्रू चैनल्स एंड बैंड्स, राइट। टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइंस, द अप ट्रेंड लाइंस जो हमने ऑलरेडी यूएसडीएनआर के चार्ट्स पे हमने ड्रॉ किया था, फ्रॉम द लोअर बाउंड टू द नेक्स्ट अपर बाउंड, राइट। तो हमने एक राइजिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखी थी, डाउन ट्रेंड लाइंस, राइट। गोल्ड में हमने फ्रॉम द टॉप
तो बॉटम दो बाउंड्स को ज्वाइंट करके या दो लोस को ज्वाइंट करके हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन बनाई थी, राइट? सो दिस इज हाउ द अप ट्रेंड लाइंस एंड डाउन ट्रेंड लाइंस, both this type of trend lines, how it has to be drawn on the chart. We have already seen that, right, on the live chart at the USD/INR chart and also on the gold spot international chart. ये दोनों चीज हमने देख ली है. Now in that same way horizontal trend lines भी draw करके हम देख सकते हैं. So आगे जाते हुए definitely live charts पे मैं वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा, right? So how to draw trend line, find key points. So in USD/INR, we already saw that around 84.40, we find the bottom, right, in the month of 2nd May 2025. वहां से हमने एक rising trend line draw की from the first low to the rising. एक the upper level पे higher low पे हमने second bound draw किया. दो पॉइंट्स को हमने ड्रॉ करके ग्रे बनाया, तो उसके साथ हमने देखा कि एक राइजिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गया. पैरेलली टू दैट वी आल्सो created a channel, right? So this already we have seen on the chart directly, right? Applications of trend line, identify trends. So using the trend lines, what we came to know that when we draw a trend line on the USD/INR chart, we came to know that the trend for USD/INR is on a rising territory. It is on a positive side, and as we were seeing on the chart, it has been forming a higher rise and higher lows pattern, right? Now supports and resistance level. So let us again go to the chart and we will see horizontal trend lines, right, and supports and resistance. So we will again go to the live charts and we will understand how to use these charts for horizontal lines as well as how to use a supports and resistance, right? So here we are again. Let me take you back to the USD/INR chart. So this is the same chart where we have drawn a trend line. Now to again, uh, just one sec. So guys, if you have any sort of doubts or any questions, you can post it on a Q&A. So we will try to answer all the doubts, right? So whatever doubts you have, please post on a chat so that we will clear your doubts. So now here we are again back on the charts. So first, let us discuss the horizontal. So again, I'll take a trend line here. So now if you this see this area, this price levels. So this is how a horizontal trend line has been drawn. Now when we are on a rising channel, if I can say, which we already drawn on the USD/INR chart, after that, we saw that the price has been facing a strong resistance zone around 88, 87 levels, right? So if you see, this is a daily chart. So multiple times from September 24, 2025 till 14th October, if you see, we have seen that the prices have been actually failing to break above 88, 87 zone or 88, 88 zone. So now we have drawn a horizontal trend line which clearly indicates that unless and until prices are not giving a breakout above this resistance area, the trend could be like either it could be on a pause or that could be some reversal. Now after the 14th October 2025, we saw a sharp downfall, right? We saw a sharp downfall from 87, 88, 87 towards the low of 87.64. But if you see, the price didn't fell below the lower bound of the rising trend line, this one, and it again started to move higher. So this shows that this trend line is valid, right? It is confirming that the prices have started to reverse from this area. और यहां से अगर हम देखें तो हमको प्राइसेस में दोबारा एक तेजी आने को दिखी है. बट अगेन इफ यू सी, again this horizontal trend line is again giving you such a strong confirmation that there is a strong resistance area at 88.87 zone. Now from 24th September, 24th September, if we see, when we got a breakout of this horizontal trend line,
on 20th of November. After 20th of November, we got a breakout on 21st of November where prices gave a break above 88.87, and we saw that the prices marked a new high of around say 89.70. So this clearly shows that how the channels, how the horizontal trend lines are used either for a support or for a resistance or for a breakout as well, right? So this all parameters which we were about to learn, all these things are covered in this one single channel, in one single chart of USD INR, right? So let us again go to the gold spot chart which we were discussing. Let us find something there. So this was the gold chart which we were discussing on a daily chart, right? So if we see here as well, so here also if I say, if I draw a horizontal trend line marking this low in the month of 17th Feb 2026, if I draw a horizontal trend line, then if you see after a fall from its peak of 5419 till the fall of 4099, we saw a recovery coming in, but prices failed to close above this horizontal resistance line, which is around 4860. प्राइस इसके ऊपर जा ही नहीं पाया और वहां से दोबारा करेक्टिव मोड में स्टार्ट हो गया ट्रेड करना, एंड वी अगेन सॉ लोअर हाइज लोअर लोस का फॉर्मेशन. So this is how we can conclude from all these tools which we are using over here, like a trend line, a rising trend line, if I can say, a falling trend line, a channel which we already saw on the USD INR. Over here also, if I drag this falling trend line to the lower bounds, then to a certain extent, if we see from this point to this point, it has been in a falling channel, right? So this is how a trend lines or a channels or a band can be used on the technical analysis to understand the trend, to understand where the support is, or that could be the breakout, or where is the resistance area, right? Now, on a small fraction of time, if I see after a consolidation frame here, if I see this is again a horizontal resistance area where if you see prices after marking a lower bound of the lower end of the trend line, it reversed, but it failed to break about 4370 area, which was the horizontal resistance area. And after that, again, we saw that prices are in a corrective territory or in a negative territory. So this is how we understand or we communicate or we see the tools which can be used for the technical analysis, right? So one more thing, going back to USD INR, and let us see how the bands which we started the session with the discussion on the bands, right? So let us go through the bands. I'll first remove this. Okay, let it be. I'll just add a band first. Let us first add Bollinger. Okay, I think I'm not able to add. Give me a second. So guys, I think I'm facing some technical issue due to which I'm not able to add the tools in that. So by that time, if I just go through the background, okay, on the chat. So guys, if you have any sort of doubts or any queries, you can post it on a Q&A or on a chat. See, for the TGS, I think you need to coordinate with the team TGS because I think that is a separate team. But I think our team will definitely get connected with you all. Gold price will increase or decrease because of war. See, already I think this is a technical Thursday session,
and we are specifically discussing mainly on how the technical tools are getting used to trade, right? So for that, I think we won't be able to discuss the things over here regarding all the fundamental or any other things. But to just give you an add-on update that we have many sessions going on where we give you the update about the fundamentals as well as the technical views which we are getting the update for gold, how it will how the trends will depend for gold. So that will be covered on Monday Mantra. So I think you can definitely join in a Monday Mantra session. That will actually help you to understand all the fundamentals and technicals what we are expecting as per the current scenarios, right? So that thing we won't be able to cover here now. So I think there are not much of the questions there overall. And if you have still have any doubt, you can post it on a Q&A on a tab, so that we will be happy to answer your doubts. So guys, I think there are no further questions coming in. So by that time, if you want, we can just take a look at some other charts where we can use these bands and tools, right? So I hope my screen is visible to all of you. I'll again try to use. So guys, this is again, I'll try to change the background as per the, I hope now it is very clearly visible. So this is again the USD INR, and this is the Keltner channels which I have added on the chart. So now, as you can see, I'll just okay. So I think Keltner channel I have already added, and this is how it looks, right? So I hope it is very, very visible. Now, as we see, this is the channel which we have already seen in the of our USD NR chart, right? So this channel we were already seen. So if you see, these blue lines are actually the Keltner channels. So now how it is going to work? So as and when I just let the zoom in, and yeah. So here if we see, as and when the prices are giving a breakout above the middle band, after that we are seeing that the trend has been turning positive, right? So this is the middle band, and as I told you, if we look at the inputs, how this, so here, if you see, it is an average true range which has been used, right? So this is the by default length. I have not changed anything as a default. This is a default input. So the discussion which we are doing, the differentiation between the Bollinger band and the Keltner channels. So this is the main difference. Here, this is like at a Keltner channels, they use an average true range to get the trend direction or the overall formulation or formulations which are considered for this pattern Keltner channel. So as and when if you see the prices are moving beyond or giving a breakout above the middle band, we are seeing that the prices are turning positive and vice versa. But as and when prices continue to hold or above this upper bound of this Keltner channel, then the momentum is much positive and the prices are continue to move higher, right? So this middle band actually give you a breakout of confirmation that as and when the prices are continue to hold above this middle band along with
any other tools if you want to use, you can use that as well, like volumes as well or RSI as well for the double confirmation. But as and when the prices are moving beyond or going beyond this middle band, we can get a confirmation that the trend is turning positive, and after a close of couple of candles, we can consider that the trend will move higher and we can turn into a buy position, or already we are having a sell position, then we can exit our positions because there is a confirmation coming in that the trend is going to turn positive, right? So this is how it can be used. Now here, when we saw that it was a strong resistance around 87.88, from there if you see over here, the price has given a breakdown below the middle band, right? From here we have again seen that the prices give a sharp weakness, and it continues to remain weak till the low of say 87.64. So this is how it works. As and when prices reverse from the lower band and it gave a breakout above the upper band, again the trend turned positive. So this is a very simple tool which we can be used on the technical analysis, just to understand the volatility, just to understand the momentum, and just to understand the trend reversal. Now, in the same way, let me try to add a Bollinger band. So here it is, a Bollinger band added on the chart, on the same USD INR chart. So if you see, there is slight difference, right? Why there is a difference? Now first let us understand the calculation part. In the Keltner channels, I showed you that it uses average true range, and here in the Bollinger band, it uses SMA, 20-day SMA, as a by default tool. So that is the only major difference. But because of this one single difference, as I told you at the start of the slide when we were discussing about Bollinger Band and Keltner channels, it is much better preferable to use Keltner channels than the Bollinger Band because of one difference use of ATR. It is very, very helpful to get the right momentum of the trend, a change in the trend. It will be give you much better indicator rather than Bollinger Band. So, guys, I think we have discussed a lot about the bands, the channels, the trend lines, the horizontal lines as well. So, I think we have covered a decent and given a decent amount of time on this. So, if you have any sort of any sort of doubts or views, I think you can share it on a chat. चार्ट बनाने की जब बात, ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, लेकिन अगर हम बीच में ही है तो कैसे लाइन बनेगा? सर, इसमें एक ऐसा है कि आपको दो डॉट जो दो पॉइंट्स है उसको जॉइंट्स करना है, राइट? सो ऐसा नहीं है कहीं से भी आप रैंडमली कोई भी चार्ट पे जाके ट्रेंड लाइन बना लोगे। सो जस्ट लेट अस टेक वन एग्जांपल। अगेन लेट अस कम टू द चार्ट। सो हम यहाँ कोई और कमोडिटी लेने को देखते हैं। चलो जिंक की कमोडिटी देखते हैं यहाँ पर। लेट मी रिमूव ऑल दिस अदर टूल्स विच आर ऑलरेडी एडेड देयर। मैं बॉलिंजर बैंड भी निकाल देता हूँ। यहाँ पर मैं, अगर मैं आर्ली चार्ट पे देखूँ तो यहाँ पर एक पैटर्न है। अभी ये क्लीन चार्ट है, तो यहाँ पर एक बॉटम है और यहाँ पर एक बॉटम है, राइट? सो कंसिडरिंग दिस टू बॉटम्स, वी कैन ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन। अब आप बोलते हैं कि ये ऑलरेडी चार्ट फ्रेम हो चुका है बिकॉज यहाँ पर ट्रेंड डेवलप हो गई है, तो हम कैसे पता करके चले? सी, आपको लोअर टाइम टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में जाके ये चार्ट्स को बनाने की कोशिश करनी होगी। जैसे कि अभी ये तो बहुत स्टिप मूव है। आई डोंट सजेस्ट कि इस तरह से इसको यूज करना चाहिए बिकॉज दिस इज नॉट द प्रॉपर राइट वे, बिकॉज ये काफी स्टीप मूव है। बट अगर जैसे देखेंगे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, राइट? Parallelly, if I draw another trend line at the bottom,
देन दिस हैज टर्न एज अ चैनल। अब मुझे देखना है कि अगर, जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं देखता हूं कि प्राइजेस अगर मेरे इस चैनल के बिलो जाते हैं, राइट, तो मुझे कंफर्मेशन मिल सकता है कि शायद अब ये जो तेजी का मोमेंटम है वो थोड़ा रिवर्स हो सकता है और प्राइजेस नीचे की तरफ आ सकते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ अ ट्रेंड लाइन और अ चैनल कैन बी ड्रॉन, और उससे हम करंट लाइव स्टेटस पे प्राइजेस का डायरेक्शन कैसे चेंज हो सकता है। आइदर इट इज गोइंग टू ब्रेक अ सपोर्ट। अब यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो टॉप है आज का, वो थोड़ा रेजिस्टेंस लिया है और वहां से दो कैंडल नेगेटिव है। दैट मीन्स देर इज some possibility of a reversal. I always use a word confirmation, right? So ऐसा नहीं है कि एक बार एक ट्रेंड लाइन या कोई चैनल ड्रॉ कर दिया तो वहां से और रेजिस्टेंस ले लिया तो वहां से ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको कंफर्मेशन के लिए वेट करना है, एटलीस्ट मिनिमम वन कैंडल, मैक्सिमम टू कैंडल्स। अभी तो हम सिर्फ कैंडल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंफर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स वी ऑल्सो यूज सम अदर टूल्स जो हम आगे की कुछ जो टेक्निकल थर्सडे के सेशंस होंगे उसमें कवर अप करेंगे। तो इन पैटर्न्स के साथ, इंफॉर्मेशंस के साथ जो टूल्स हम यूज कर रहे हैं आज के लिए, ट्रेंड लाइन, चैनल्स, बैंड्स, व्हाटएवर, उसके साथ एक तो कैंडल्स का कंफर्मेशन होगा कि जो रिवर्सल आपको दिखाता है कि नहीं। दूसरा, जो मैं हमेशा ज्यादातर यूज करता हूं और सबको कहता हूं कि वो यूज कर सकते हैं एज अ सेकंड कंफर्मेशन, दैट इज वॉल्यूम्स एंड आरएसआई। ये दोनों टूल्स ऐसे हैं जो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन देते हैं कि यहां से प्राइजेस तो रिवर्स हो गए, ग्रीन कैंडल से दो नेगेटिव रेड कैंडल तो आ गए, क्या इसके साथ नेगेटिव कैंडल्स के साथ क्या वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं? इफ यस, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहां से ट्रेंड रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी बन सकती है। आई एम नॉट सेइंग करंट लाइव चार्ट पे कि ये हो रहा है, आई एम जस्ट गिविंग यू द प्रोबेबिलिटी, राइट। और उसके साथ अगर आरएसआई भी अगर नेगेटिव फॉर्मेशन बनाता हुआ दिखा रहा है या डाउनवर्ड इंचिंग हो रहा है, तो वो एक सेकंड कंफर्मेशन होगा कि यस, वॉल्यूम्स भी पिकअप हो रहे हैं, कैंडल्स भी रेड है और आरएसआई भी नीचे इंडिकेट कर रहा है। दैट मींस देयर इज अ वेरी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि प्राइसेस थोड़ा नीचे गिर सकते हैं। अब नीचे गिरेंगे तो कहां तक? अब इनिशियल पॉसिबिलिटी हो सकती है तो लोअर बैंड ऑफ राइजिंग ट्रेंड लाइन है, इनिशियली वहां तक गिर सकते हैं। अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो नेक्स्ट कोई हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होगा, वहां तक गिर सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो ये नेक्स्ट पॉइंट ऑफ हाई था, फर्स्ट पॉसिबिलिटी होगी कि यहां तक प्राइस गिर सकता है। अगेन, आई एम नॉट गिविंग एनी सॉर्ट ऑफ ट्रेड और एनी सॉर्ट ऑफ व्यूज, इट इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग की टूल्स को, कैंडल्स को या अदर दूसरे टूल्स को कैसे यूज कर सकते हैं अपने लेवल्स को रिफाइन करने के लिए, राइट। सो दिस इज अ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट गिविंग एनी सॉर्ट ऑफ ट्रेड ओवर हियर, बट how to use all these tools that will help you to understand where it's support or resistance, or is there a trend reversal sort of thing which has been forming on the chart, right? So इस तरह से हम अपने इस टूल्स को यूज करके चल सकते हैं, राइट। सो आई होप हमने काफी सारे टूल्स का डिस्कशंस, काफी क्वेश्चंस जो आए थे उसका मैंने आंसर किया है। ओके, जब अप ट्रेंड में होता है, अप्रोक्सीमेट कंप्लीट हो जाता है, तब कैसे पता चलता है? देख, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि चैनल पे कैसे रिवर्सल कंफर्मेशन था, तो मतलब वो रिवर्सल जो मैंने बताया अभी, जिंक का जो चार्ट था वहां पर टॉप पे हमने देखा कि एक तो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद दो नेगेटिव कैंडल्स आ गए, प्लस मैंने एक और दो सजेशंस दिए थे, वॉल्यूम्स और आरएसआई। तो जब इस तरह का रिवर्सल का कंफर्मेशन हमको सारी चीजों से मिलता है, वो एक फर्स्ट इंडिकेशन होता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है, जो अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ये हर बार क्वेश्चंस आता है कि विच व्हाट आर द टाइम फ्रेम विच वी नीड टू टेक। सी, कोई भी टेक्निकल में किसी भी चार्ट पैटर्न, फॉर्मेशन, ट्रेंड लाइंस, टूल्स, व्हाटएवर आप यूज कर सकते हैं। कोई भी चार्ट आप यूज करो, किसी भी कमोडिटी का या इक्विटी का स्टॉक कोई भी आप यूज करो, तो आप कोई भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं। बट मैं हमेशा जैसे कहता हूं, अगर आप 15 मिनट के लिए उसको यूज करोगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आपको रिजल्ट या प्राइस मोमेंटम उस 15 मिनट के टाइम फ्रेम की पोटेंशियल के साथ से मिलेगा। यानी 15 मिनट का चार्ट आपको इंट्राडे का पॉइंट ऑफ व्यू से मोमेंटम दिखाएगा, और अगर आप 4 आवर्ली चार्ट या डेली चार्ट यूज करोगे तो वो आपको शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म का व्यू दिखाएगा। सो टाइम फ्रेम इस तरह से यूज करना है कि आप किस तरह की स्ट्रेटेजी में एंटर होना चाहते हैं। अगर आप
इंट्राडे स्ट्रेटेजी में एंटर होना चाहते हैं तो आप 15 मिनट से 1 घंटे का टाइम फ्रेम को यूज करिए और उसमें चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन जो होते हैं आपको उस तरह से रिजल्ट देंगे। अगर आप मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो डेली वीकली यूज कर सकते हैं, या शॉर्ट टर्म के लिए यूज करना चाहते हैं तो 4 आवरली चार्ट्स को यूज करके चल सकते हैं। सो राइट, सो दिस इज हाउ द टाइम फ्रेम कैन बी यूज्ड फॉर एनी ऑफ द चार्ट पैटर्न, not only on the today's topic which we have covered, but in any of the chart patterns we can use that, right? Okay guys, so I think we have covered all the things which we were about to discuss, so we will welcome your suggestions. आज का सेशंस आपको कैसा लगा तो ये आप जरूर हमें बताइए, और आगे के भी हमारे टेक्निकल थर्सडे के जो सेशंस है वो डेफिनेटली ज्वाइन करिए। मंडे मंत्रा होता है, सैटरडे को ऑप्शंस होता है, एंड एवरी थर्सडे वी हैव अ टेक्निकल थर्सडे, जहां पर हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निकल टूल्स हम आप सबको बता के लाइव चार्ट्स में समझाने की कोशिश करते हैं। सो राइट, सो थैंक यू ऑल for connecting us with today. We will again meet in next session. Thank you all.